अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक कैपेसिटर के बारे में कैपेसिटर है क्या और ये किस बुनियाद पे काम करता है और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। आइए पढ़ते हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर बेसिकली है एक डिवाइस है दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। बेसिकली कैपेसिटर में जो है ना दो प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक जो है ना नेगेटिवली चार्ज्ड। एक को टर्मिनल की नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है और दूसरे को जो है ना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दी जाती है। ये जो है ये कैपेसिटेंस है। इस एरिया को यहाँ पे भी चार्जेस है, यहाँ पे भी चार्जेस जमा हो जाते हैं और ये यहाँ से हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं। When a voltage is applied to the capacitor, the charges start depositing on the plates of a capacitor. There is a vacuum between two plates that functions of a capacitance of a capacitor. कैपेसिटेंस को हम जितना भी वोल्टेज देते हैं वो स्टोर होता है कैपेसिटर में। वोल्टेज अप्लाई कर ले तो वोल्टेज चार्जेस स्टोर होते हैं कैपेसिटर में और जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टोर्ड चार्जेस। इफ़ कंडीशन है अगर कैपेसिटेंस रिमेन्स कांस्टेंट, सी जो है ना कैपेसिटेंस को शो करता है और क्यू चार्जेस को, वी वोल्टेज को शो करता है। ये बेसिक इक्वेशन है कैपेसिटर का। और इसी तरह सी जो है ना कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस जो है ना वी अपॉन क्यू से रिप्रेजेंट करता है। व्हेन 1 वोल्ट ऑफ चार्ज, व्हेन 1 volt potential difference is applied and 1 coulomb charge stored in a body in a capacitor, such is said to be 1 farad. Farad is the unit of capacitance. Capacitance is the ability of a capacitor to store charges. That's all for today, respected viewers. Thank you so much for watching the video. Thank you.